Namaskar and Atmavandan to all the people who have joined from Zoom link and Facebook Live. As we all know, we are celebrating 7th International Yoga Day on 21st of June. As a part of this celebration, Mahayogdham has planned arranged this event. It's a 4-day session of Yogasan and Pranayam that is called Kriya Yoga by us. Actually, it is a second day. Yesterday we have done it. Kriya Yoga is invented by our Sadguru spiritual master Sir Rameshwarji Somani. And our disciples from Mahayogdham are getting benefited from it for many years. Our disciples of Mahayogdham are getting benefited from many years in many aspects like immediate energy gain, health issues and so on. Kriya Yoga is the basic principle of Mahayogdham which we are working on. Another 3 are advanced nutrition that we call it as Charvan Tarpan. Number 3 is counseling and number 4 is meditation. That is the very base of our Mahayogdham. This meditation is after Kundalini Jagran. These are the 4 basic principles of Mahayogdham which for years our Sadguru Sir is working on. Now we just quickly go through the timetable. Today on 19th of June, Vaishali Jagtap from Pune will conduct the classes. Tomorrow on 20th of June, Sheetal Sarda from Pune will take it. And on 24th of June, Kirti Somani from Parbhani will conduct the classes. Now a short intro of Vaishali Jagtap. She is taking today's classes. Vaishali Jagtap is from Pune. By profession, she is a pharmacist. Till from 2013, she is our disciple and working in this area, Kriya Yoga, from last 4 years. So wish you all the best to all who have joined the link and get well, do well and get energized by our Kriya Yoga. Thank you so much. Vaishali, ready? 1 minute. Yes. Can I start? Okay. Good morning, everyone. सदगुरु श्री रामेश्वर सोमानी जी सर को प्रणाम करते हुए आज उन्होंने संशोधित किया हुआ क्रिया योग, उन्हीं से सीखा हुआ क्रिया योग में आपके सामने प्रारंभ करती हूँ। प्रार्थना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे अंदर की जो प्राण शक्ति है वो प्राण शक्ति को This meeting is being recorded. नमन करते हुए 3 ओंकार लेंगे। सुखासन में बैठिए, दोनों हाथों की ध्यान मुद्रा, आंखें बंद, सिट स्ट्रेट, गहरी सांस लेते हुए 3 ओंकार लेंगे।
Stop. हुकार प्राणायाम. Make a mouth funnel. Focus on the word WHO. यह हुकार प्राणायाम अपान प्राणायाम भी इसे कहते हैं. इससे अपान वायु की शुद्धि होके गले के नीचे का जो शरीर का हिस्सा है उसकी शुद्धि होती है और वात और पित्त कफ इससे धीरे धीरे दूर होते हैं. ओके, हुकार प्राणायाम करेंगे. एवरी टाइम यू शुड टेक अ डीप ब्रेथ. नाभि से लेके हु का उच्चारण करते हुए मुंह से सांस को छोड़ना है. रेडी? स्टॉप. अभी शॉर्ट हुकार करेंगे. पेट अंदर खींचना है. एट द सेम टाइम मुंह से हु का उच्चारण करना है. रेडी? स्टार्ट. 50 स्ट्रोक्स. हो 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 ho 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 ho. Stop. Feel the vibrations all over the body. Slowly open your eyes. अभी हम खड़े होके क्रिया योग करेंगे. 3 चीजें मैं बताना चाहती हूँ. क्रिया योग करते वक्त हर एक जो क्रिया हम करेंगे उसमें एक्सलेशन करना है. सांस छोड़ के क्रिया करनी है. दूसरा जो है दोनों क्रिया के बीच में दीर्घ श्वसन करना है, डीप ब्रीदिंग. एंड तीसरा जो भी करेंगे एज पर योर स्पीड. ओके, स्टैंड अप. Okay, ready for standing exercise? Start with warm up, slow walk with exhalation. Ready? अपनी जगह पे वॉक करना है सांस छोड़ते हुए. Stop. Take a deep breath. Next one, Kadamta with clapping. Every time you should take your leg in right angle. Start.
करते तू ते पोटाचे ते कर जसं आमने तेच करायला तेच लागू केले तू स्वतः कर म्हणाले स्टॉप। करतो आहे करायला तसं 2 मिनिटं थांब. गहरी सांस लीजिए। Next one, back कदम का try to touch your heels to the hips. Start. Stop. मला हे करू नको सगळे संपल्यावर करतोस का मग मग ते करू नको काय हेच करू का अरे ते कर मग थांब ना थोडं. Next one, jumping exercise. Palms facing on the sky. Jump with exhalation 50 times. Ready? Start. हाथों को रुक छोड़ना है, ऊपर नीचे करना है। Stop. Immediately, you can take a deep breath. Close your eyes. Feel the blood circulation all over the body. Next one. Wrist twisting. दोनों पैर के बीच में 1 feet distance. दोनों हाथ कमर पे ट्विस्ट करने हैं टुवर्ड्स लेफ्ट साइड एंड राइट साइड विथ एक्सलेशन। स्टार्ट। ओनली मूव योर लोअर बॉडी। Stop. Next one, waist rotations, clockwise. Anti-clockwise. Stop. Forward bending. नीचे झुक के 3 times सांस छोड़नी है। Ready? Come in center. Turn back and hold. Relax. Repeat. Come in center. Turn back and hold. Relax. Side bending. Right side. Left. Right. Stop. Next one. Again 1 feet distance in between two legs. Right hand touches to right toe, left hand touches to left toe. Ready? Start with exhalation. One of the best exhalation kriya. We are trying to exhale out all carbon, toxins and unnecessary gases from this exhalation. So this is very important part.
Stop. Come back. Deep breathing. अभी नेक्स्ट क्रिया करने वाले हैं पदहस्तासन क्रिया इन 4 स्टेप्स. फर्स्ट वन, स्ट्रेच योर हैंड्स अपवर्ड. 2, bend down. 3, again stretch your hands upward. And 4, hands down. Get it? Now do with exhalation. Start. स्टॉप डाउन. नीचे जाके रुकना है. अभी वहीं पे ऊपर नीचे हाथ करेंगे विद एक्सहेलेशन. स्टॉप डाउन. ट्राई टू टच योर palms to the ground. Without bending knees, you should keep the posture at least 7 to 8 beats. Head towards your knees. Slowly come back. Relax your hands. Okay. Next one, side PT. Again in 4 steps. Hands in shoulder line. Spread your right leg towards right side. 1, 2. Bend towards your right side. Right hand it is to right 2. Left hand upward. नजर ऊपर की ओर पे. 3. Again come up. And 4. Do the same with opposite side. 1, 2, 3, 4. Come on, do with exhalation. Stop on one side. Hold the posture. This is Trikonasana. First variation. Relax. Other side. Look at the fingertips of raised hand. Relax. Take a deep breath. Now go for hand stretches. Ready? Open your fingers at the front side with exhalation. Spread your hands in shoulder line. Stop. Move breathing. Now stretch your hands forward, make a fist and pull back your hands.
20 strokes. Start. Stop. Stretch your hands at the back side. Feel the stretch in your shoulder tips and back muscles. Hold for a while. Relax. Next one. Now hand rotations. Put both hands together. Slowly rotate your hands as the ligaments are very sensitive. Ready? Start. Anti-clockwise. Stop. अभी ताड़ासन प्राणायाम करेंगे. Look at me. गहरी सांस लेते हुए सांस को रुका के रखेंगे. Stretch your hands upward. Stand on your toes. Fingers movement, contract and relax. Contract and stretch your fingers. Don't blink your eyes. Try to stretch your eyes. नजर सामने. जब भी सांस छूटे हाथ नीचे. One more time. Ready? पूरी प्राण शक्ति हाथों में, आंखों में. Relax. It really improves our eyesight also. Okay, next one. Are we ready for Surya Namaskar? Take your positions. Namaskar Sthiti. While doing Surya Namaskar, focus on each asana Sthiti. सूर्य नमस्कार करें. We are doing in 10 states. Om Mitraya Namaha. एक. Stretch your hands at the back side. चार पैसे नहीं. हस्त उत्थानासन. मुझको पानी. दो. सांस छोड़ते हुए नीचे रखना है. Exhale down. Step towards your knees. Padahastasana. 3. Ashwasanchalanasana. Ideally, make sure you between two hands. Stretch your head back. 4. Parvatasana. Mountain pose. 5. Ashtangasana. 6. Bhujangasana. 7. Again Parvatasana. 8. वही पैर को आगे लाएंगे. 9. 10. Again नमस्कार स्थिति. ओम भास्कराय नमः. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ओम आदित्याय नमः. 1. 2. 3. Change your leg.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओम रवये नमः। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Try to rest your heels completely on the mat. 8, 9, 10। ओम भानवे नमः। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स, सिट डाउन, सुखासन में बैठिए। Try to relax forward. If you feel thirsty, take 1 or 2 sips of water. आंखें बंद करके थोड़ा रिलैक्स फील कीजिए। Try to relax your body and mind as well. अभी हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। हाथों की मुद्रा, थंब on one nostril, 2 fingers on your Agya chakra, and last 2 fingers on another nostril. Okay? Now inhale from one nostril. Hold your breathing at least 3 seconds. While holding, concentrate on your Agya chakra and exhale from the other. Again, inhale from the same. Hold it. Exhale. This completes one cycle. Do 2 more cycles. Slowly but deeply inhale. Hold. Exhale. Inhale. Hold. Exhale. Stop. हाथ नीचे, दोनों हाथों की मुद्रा, ध्यान मुद्रा या फिर अपान मुद्रा लगाइए। अभी कपालभाति करेंगे। 100 स्ट्रोक्स 50-50 के बैचेस में करेंगे। कपालभाति करते टाइम 2 things keep in mind. Don't lift your shoulders, and while doing Kapalbhati, contract your stomach. At the same time, you exhale from your nose. Okay?
इन्हेल करेंगे एक बार, दीर्घ सांस लीजिए, एक्सेल, इन्हेल एंड स्टार्ट। स्टॉप। धीरे धीरे कपालभाति प्राणायाम 100 से लेके 500 तक हम बढ़ा सकते हैं। स्टिल क्लोज योर आईज, फील द वाइब्रेशंस, slowly open your eyes. Now ready for taking exercises? Start with neck exercises. Ready? Front and back bending 2 times with exhalation. Start. Turn towards left side. शोल्डर मत उठाइए, अपोजिट साइड का स्ट्रेच फील कीजिए। टुवर्ड्स राइट, रिपीट। Side to side, move your neck towards left side, right, again left, right, and relax. Now neck rotation. Touch your chin to the chest line. Rotate 2 times clockwise. स्लोली करना है। जिनको वर्टिगो का प्रॉब्लम है या फिर चक्कर आती है वो आंखें खुली रख के कर सकते हैं। एंटी क्लॉकवाइज। Stop. Now, Malyachalam, shake your neck at the back side. Slowly shake it. Stop. Turn back your neck with exhalation. धीरे करना है। Ready? Stop. Left to right. Right to left. Stop. अभी सीधा नमन क्रिया थोड़ी डिफरेंट टाइप में करेंगे। Make your fist. Put it on your lower abdomen. अभी नीचे झुकते हुए सांस को छोड़ना है। It cures your gastric problems. Ready? Start. Stop down. Touch your head to the ground. Relax. Come back.
Now interlock your hands, put it on your back side of the head. Hand stretches. Ready? Start. Stop. अभी हाथों से नेक को पुश करेंगे. Apply the same pressure from both the sides. Hold your breathing. Stretch your eyes. This is one of the best pranayam. Relax. One more time. रिलैक्स. वज्रासन में बैठिए. वज्रासन में बैठ के अभी फ्रंट बेंडिंग करेंगे. स्टार्ट विथ एक्सलेशन. दोनों हाथ आगे की तरफ, सिर को झुकाना है सांस छोड़ते हुए. स्टार्ट. Stop. Relax. Now front and back bending together. Ready? Start. हाथों को आगे लेके जाना है, पीछे लेके जाना है. Stop at the back side. Stretch your neck back. Hold for a while and relax. अब दोनों पैरों में थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट करेंगे. सुप्त वज्रासन करेंगे. जिनको भी स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है वो मत कीजिए. दोनों पैरों में थोड़ा डिस्टेंस. Now rest your hands. एल्बोस टच करते हुए नेक को पीछे लेके जाना है. होल्ड करना है. अभी धीरे धीरे रेस्ट योर बैक कंप्लीटली ऑन द मैट. क्लोज योर आईज. Focus on your lower abdomen. धीरे धीरे आसन स्थिति छोड़ेंगे. एल्बोज के ऊपर आ जाइए and come back to the normal position. वज्रासन छोड़ेंगे. Now relax your legs. Stretch your feet at the front side and back side. Ready? Start with exhalation. Stop. Ankle rotations. Clockwise. Anti-clockwise. Stop. Next kriya. Now keep your right palm on your left knee
left hand towards left side and turn towards your left side. Again, right hand on your left hand on your right knee and turn towards your right side. Keep on doing this kriya with exhalation. Ready? Start. Stop on one side. Sit at the back wall. Keep lifting of your spinal cord. Relax. Other side. And relax. अभी पश्चिमोत्तानासन करेंगे. First of all, do crunches, hand crunches towards your toes with exhalation. Start. Stop down. धीरे धीरे नीचे जाने की कोशिश कीजिए. Try to touch your head to the knees. Relax. Very good. One more time. Ready? Start. Stop down. Relax. Now जानुशीरासन करेंगे. एक पैर फोल्ड, दोनों पैरों में डिस्टेंस. एक पैर फोल्ड करेंगे. Now left hand crunches towards your left toe. Start. Stop down. Again, you should try to touch your leg to the knee. Leave the stage in your calf muscles. Thighs. Relax. Other side. Fold your left leg. Right hand crunches towards your right toe. Ready? Start with exhalation. Stop down. Try to keep the posture at least 5 to 6 minutes. Relax. अभी बटरफ्लाई करेंगे. Up and down crunches of your thighs. Backward straight. Ready? Start. Stop. दोनों पैरों को पीछे लेकर आना है बद्ध कोणासन में. Again do up and down crunches of your thighs. Start with exhalation. Stop. Now stretch your thighs towards ground, backward straight. Hold your breathing.
Stretch your eyes. This is the best combination, stretching with pranayama. Relax. One more time. Relax. Now, sleeping exercises करेंगे. Lie down. गहरी सांस लीजिए. थोड़ा रिलैक्स फील कीजिए. दोनों पैर टैप करेंगे. Knee on the knee, toe on the toe. Ready? Start with exhalation. Increase your speed. It really cures your constipation problems. Stop. गहरी सांस. Next one. Leg lifting. Start with your right leg. Every leg you should keep in right angle. Start with exhalation. Right leg को hold कीजिए. Stop. Keep your right leg in right angle. Now do crunches towards your toes, chest. Sorry. With exhalation. Start. Stop. Hold कीजिए लेग को. Hold your leg. चेस्ट की तरफ कीजिए. Now lift your head. Try to touch your forehead to the knee. Hold for a while. Ardha Pavana Muktasana. Relax. Do the same with the left leg. Keep your left leg in right angle. Do crunches towards your chest with exhalation. Stop. Hold your leg. Lift your knee. Hold for a while. रिलैक्स. अभी दोनों पैर फोल्ड करेंगे. पवन मुक्तासन. फर्स्ट ऑफ ऑल डू क्रंचेस टुवर्ड्स योर चेस्ट. रेडी? स्टार्ट. Stop. Lift your head. Try to keep the posture at least 7 to 8 seconds. Relax. One more time. Relax.
Relax your stomach line. Take a deep breath. अभी दोनों पैरों में डिस्टेंस रखेंगे, 1 फीट डिस्टेंस. बोथ लेग्स, दोनों लेग्स फोल्ड करेंगे. नाउ नेक्स्ट क्रिया, नी टचेस टू एंकल. राइट नी टचेस टू लेफ्ट एंकल, लेफ्ट नी टचेस टू राइट एंकल. Do with exhalation. Ready? Hands in body line. Start this kriya with exhalation. Practicing of this kriya really reduces your hip fat. Stop on one side. Right knee touches to left ankle. Your left leg should be straight. Relax. Other side. Left knee touches to right ankle. Relax. Keep closer both the legs. अभी दोनों पैर. Left side. Hands in shoulder line. Both legs should be on one side. Neck should be on opposite side. Full twisting of your spinal cord, stomach line, back root. Other side. Right side. Dono pair right side. Neck should be on left side. Do this kriya with exhalation. Come on, start. Stop on one side, overlap your legs. Relax. Other side. Leg should be on right side, leg should be on left side. Hold it for 5 to 6 seconds. This kriya really increases your spinal cord flexibility. Relax. Next one. Bang your waist on the mat. कमर को मैट पे पटकाना है. Ready? Start with exhalation. Stop. Now lift your lower body. Bhadrasana या सेतु बंधासन करेंगे. Hold the posture for 9 to 10 minutes. Relax. One more time. Lift. Relax. Relax your legs. Relax the stomach line. गहरी सांस लीजिए. अभी हम ताड़ासन प्राणायाम करेंगे. In sleeping position. Stretch your lower body and upper body together. Look at ceiling.
Stretch your eyes and hold your breathing. Stretch. Relax. One more time. Stretch. Every stretching exercise improves the blood circulation in your body. Relax. Down on one side. पेट पे सोएंगे अभी. Sleep on your belly. मकरासन में put your both hands on your cheeks. पैरों की क्रिया करेंगे. Try to touch your heels to the hips with alternate legs. Start with exhalation. Stop. Both legs together. Stop. And relax. अभी दोनों हाथ भुजंगासन में. भुजंगासन में क्रंचेस करेंगे. अप एंड डाउन क्रंचेस in Bhujangasana with exhalation. Start. Stop. Hold the posture. Stretch your neck back. Focus on your lower abdomen. Relax. Slowly stand on your knees. घुटनों पे आना है. मार्जरासन करेंगे. पीठ ऊपर, गर्दन नीचे. कैमल पोजीशन. कमर को नीचे दबाते हुए सामने देखना है. अगेन मार्जरासन. अभी शशांक आसन में जाएंगे. स्ट्रेच योर हैंड्स फॉरवर्ड. पुट योर हेड टू द ग्राउंड. ट्राई टू फील रिलैक्स. फोकस ऑन all inner organs in your body. Try to relax your body and mind as well. Slowly come and sit in Vajrasana. वज्रासन में देखिए. जिनको वज्रासन में पॉसिबल नहीं है सुखासन में बैठ सकते हैं. भ्रामरी करेंगे. भ्रामरी करेंगे. बोथ फिंगर्स, कीप योर बोथ फिंगर्स इन योर ईयर. 3 टाइम्स भ्रामरी. म का उच्चारण करते हुए नाक से सांस को छोड़ना है. स्टार्ट.
दोनों हाथों की मुद्रा, गुंजन करेंगे। एवरी टाइम यू शुड टेक अ डीप ब्रेथ। गहरी सांस लेते हुए एक ओंकार लेंगे। शांति मंत्र। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। Rub your hands, put it across your face and slowly open your eyes. Thank you everyone. Have a nice day. Thank you. Thank you. The recording has stopped. Thank you, Vaishali. Beautiful session.